ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उसमें हमारे 2 टाइप्स थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कवर कर चुके हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी विल कवर टुडे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So today what I will explain you, which type I will explain you today. It is general purpose application software. And what is the definition of general purpose application software? These softwares can perform many tasks to fulfill the general needs of people. What are these general needs? General needs का मतलब है to type, to draw, to edit, to format, to calculate, okay, to listen audio, to record audio, or to watch the video, to send the files, to receive the files, etc. The general task, ठीक है, कॉमन टास्क विच वी वांट टू डू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, उसके लिए हमें जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है. सो इसमें देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स और यू कैन से टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इट इज़ बेटर टू क्रिएट अ टेबल ऑफ दीज टाइप्स फर्स्ट, कि कितने टाइप के होते हैं. सो फर्स्ट व्हाट यू कैन डू, if you are having a notebook, you can write down the names of these types. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्स्ट टाइप होता है आपका जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. You can create a chart like this. The first type is word processing software. The second type is electronic spreadsheet. Third type is database management system. Fourth is presentation software. Fifth, it is desktop publishing software. Sixth, graphic software. Sixth is graphic software. And seventh or last is multimedia software. So these are the types of general purpose application software. ठीक है, ये इतने टाइप्स हैं. टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 different types of general purpose application software. It is better to write their examples in front of these types also. ठीक है, आप इनके सामने क्या करिए, एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए. इफ़ यू आर क्रिएटिंग दिस चार्ट, so write the examples also.
Word example of word processing is MS Word or WordPad. Example of electronic spreadsheet is MS Excel or Lotus 123. Example of database management MS Access or Oracle. Example of presentation software is MS PowerPoint. Or you can write OpenOffice. OpenOffice is not a software of Microsoft, okay? And this Oracle or this Lotus 123 also. Example of desktop publishing is CorelDRAW or Publisher. Example of graphic software is MS Paint or Photoshop. Example of multimedia software is Windows Media Player, and second example is Windows Movie Maker. Okay, so these are the examples of the respective types. ठीक है, ये types हो गए आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और ये उनके एग्जाम्पल. ठीक है, तो हमने हर एग्जाम्पल आपके हर टाइप के कितने एग्जाम्पल दिए, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स यू हैव टू राइट इन योर आंसर शीट. ठीक, आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो लिखने ही हैं और याद करने हैं. तो अब पहले क्लियर करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. Word processing means a kind of software which is capable to handle all the text data. ठीक, टेक्स्ट में क्या क्या आता है? टेक्स्ट में आपके आते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड सिंबल्स. ठीक है, ये इतने सारा कॉम्बिनेशन किस में आता है? दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट. इफ एनी सॉफ्टवेयर इज गिविंग अस द फ्रीडम if any software is giving us the freedom to type the content, type the text, ठीक है, either in capital or in small caps, numbers also, symbols also, जितने भी symbols हम कीबोर्ड पे देखते हैं या फिर जो बाकी symbols हम डाउनलोड कर सकते हैं from internet. So after typing, if the software is also giving us access to format or to edit that type data, इट मीन्स कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड यानी कि जो वर्ड्स को फॉर्मेट या एडिट करने में केपेबल है. अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स क्विकली एंड एफिशिएंटली. प्रोवाइड मैनी फीचर्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट. अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट मीन्स कि सपोज आपने कोई अल्फ़ाबेट टाइप किया एंड आफ्टर टाइपिंग दैट अल्फ़ाबेट यू वांट टू चेंज द लुक ऑफ टाइप्ड टेक्स्ट. ठीक है, आपको टाइप टेक्स्ट का क्या चेंज करना है? लुक. कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस स्टाइल से जिस टाइप से टेक्स्ट हुआ है, यू वांट टू चेंज इट इनटू समथिंग मोर क्रिएटिव लुकिंग और फैंसी टेक्स्ट. उसको किस में चेंज कर देना है? एक प्लेन लुकिंग टेक्स्ट से उसको एक फैंसी से टेक्स्ट में चेंज कर देना है. दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. सो और एंड
Formatting also includes to add, delete, rearrange or beautify the text, and can even produce a hard copy. After typing the text, after creating the document in that word processing software, we can also take a printout with the help of these सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, MS वर्ड एंड वर्ड पैड हमने दो एग्जांपल दिए ना. अगर इन पे हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आफ्टर क्रिएटिंग दैट डॉक्यूमेंट वी कैन ऑल्सो फॉर्मेट इट and save it inside the computer memory as a soft copy. और अगर हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए तो with the help of attached printer we can get it a hard copy of that document also as per the requirement. ठीक, तो ये मीनिंग था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का. नाउ सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम विच इज़ केपेबल टू हैंडल ऑल द न्यूमरिक वैल्यूज. ठीक है, जो नंबर्स को जिनको हम टाइप कर पाए एंड आफ्टर टाइपिंग दोज नंबर्स दैट सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो गिविंग अस द परमिशन और एक्सेस और फ्रीडम टू कैलकुलेट दोज न्यूमरिक वैल्यू ऑल्सो. हम जो MS वर्ड पे अगर हम कोई नंबर्स या ऐसे कोई वैल्यूज टाइप कर रहे हैं जो न्यूमरिक हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम उनको डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग. सो दैट इज़ वाई इफ़ वी वांट टू ऑर्गेनाइज आवर डेटा, न्यूमरिक डेटा एंड एज वेल एज वी वांट टू कैलकुलेट दोज न्यूमरिक वैल्यूज ऑल्सो, तो हमें किस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. So a spreadsheet program helps us to perform calculation and display the data in the form of a chart to analyze it in a better way. It is used for creating documents to manage and organize numerical data. Numerical means numbers. Some of its applications are financial accounting, cost analysis, interest calculations, etc. So हमने यहाँ पे कौन से दो एग्जाम्पल दिए, MS Excel and Lotus 1, 2, 3. ठीक है, many times you will get such question कि what was the first electronic spreadsheet program या what is the name of the first electronic spreadsheet program. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे पहला कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका क्या नाम था. सो द आंसर इज VisiCalc. If you get this question कि what is the name of the first electronic spreadsheet program, तो उसका नेम था VISICALC, calc. VisiCalc was the first electronic spreadsheet program. Now the third type is database management system or DBMS in short. As you know, each one of us uses database in our daily routine. For example, as a student, you are managing your timetable. Okay, so timetable क्या हो गया, database हो गया. And database software helps us to arrange and store a large amount of information in an organized manner. जैसे कि electronic spreadsheet software is also helps us to manage or organize our data. Okay, but and database management software is also helping us to manage and organize our data, but we cannot calculate our data in database management software. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं DBMS, these are only helpful to organize and to maintain a huge amount of data. वो डेटा चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में हो चाहे नंबर्स फॉर्मेट में हो, उनको अगर वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा बहुत है, नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ टेबल्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको सेव करने में, एनालाइज करने में, ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करता है. टू एग्जाम्पल आर MS Access एंड Oracle. ठीक, सो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू अरेंज एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. और what other things we can do with our saved data? In DBMS softwares, we can easily create, add, find, update, sort information, and we can also search information, we can print information and retrieve the information stored in the database software.
Fourth type is presentation software. Presentation software is the, I think this is the software जिससे आप पहले ही familiar हो, because you are creating your presentations all the time for a school project. So it is used to present an idea or concept in a lively manner. This software helps you to create and display slides on a computer or a projector for business and educational purposes. It lets you create slides, charts, animation and video clips. Example, OpenOffice and PowerPoint. Then next example is desktop publishing software. डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐसे टाइप का सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन डिज़ाइन और वी कैन प्रिंट एनीथिंग, यानी कि अब प्रिंटिंग तो हम और भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं. इफ़ वी आर क्रिएटिंग एनी डॉक्यूमेंट, इफ़ वी आर डिज़ाइनिंग एनीथिंग ऑन MS वर्ड तो भी हम प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट थ्रू के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं. बट दीज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स आर स्पेशली डिज़ाइन to create logo, brochures, flyers, calendars, page cover, book cover, or anything whatever we want to design for any hard copy layout. ठीक है, हम अब किसी भी हार्ड कॉपी लेआउट के लिए या पेपर के लिए इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन समथिंग और उसको डिज़ाइन करने के बाद हमें प्रिंट भी करना है, हमारा मेन पर्पस क्या है, उसको प्रिंट करना. सो ऐसे वर्क को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग. एंड टू डू सच टास्क हमें किस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. सो दिस एप्लीकेशन हेल्प्स अस टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक फीचर्स. ग्राफिक मीन्स images to design professional documents like newsletter, printed forms, advertisement, books, brochures, posters, magazine, calendars, logo, symbols, etc. Example, Corel Draw and Publisher, MS Publisher. Okay. So these are the softwares which we use to print, to design and then print anything. Now the sixth type is graphic software. Graphic software is generally used to create images. Images वो कैसे भी images हो सकती हैं, vector graphic, raster graphic, charts, photographs. We can save any, we can scan an image and after scanning we can edit and retouch that photo. ठीक है, उसको ठीक कर सकते हैं. We can create logos, cartoons, animations and after creating them we can watch the movement of these images as well. ठीक, तो ये सॉफ्टवेयर्स क्या हेल्प करते हैं, हमें किसी भी तरह की ड्राइंग या डिज़ाइनिंग पर्पस को सॉल्व करने में. यानी कि सपोज यू वांट टू क्रिएट एनी एनिमेशन, यू वांट टू क्रिएट एनी लोगो, ठीक, यू वांट टू रीटच एनी इमेज, कोई इमेज है ख़राब हो गई उसको सही करना है, या यू वांट टू क्रिएट ड्राइंग्स, आपका ड्राइंग करने का मन है, तो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू विल, आपको कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफिक सॉफ्टवेयर. सो ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट images such as charts, graph, photograph, logo, cartoons and much more. Example, paint, Photoshop, etc. Last type is multimedia software. Multi means बहुत तरह के, media means different formats. मीडिया में आपके टेक्स्ट भी आता है, इमेजेस भी आता है, वीडियो भी आता है, ऑडियो भी आता है. सो इट इज़ यूज टू क्रिएट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स वी कैन क्रिएट एज वेल एज, हम क्रिएट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वी कैन वॉच और वी कैन लिसन, हम तीनों काम कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट, वी कैन वॉच और वी कैन लिसन any video, animation, sound, graphic and text with a high degree of interaction. High degree of interaction means live. Okay, we can watch live videos, we can play videos, we can alter videos, edit videos, we can also edit audio files also, we can watch, we can play, or we can maximize or minimize, we can edit any type of media such as text or graphic. ठीक,
तो इन सब पे हम वर्क कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ठीक, एंड विंडोज़ मूवी मेकर। सो इफ़ यू आर हैविंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन दो सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम किसी भी तरह की मूवी को देख सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं एंड इमेजेस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी आपके सारे टाइप्स किसके? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के। एंड इनके एग्जाम्पल सामने, आई होप आपने इसका डायग्राम क्रिएट कर लिया होगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो आपका जनरल पर्पस हो गया, अब हमें समझाना है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। सो जनरल पर्पस खत्म। नाउ अब जो सेकेंड टाइप था इन योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वी आर हैविंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स थे, डिफरेंट टाइप्स थे। वैसे स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स नहीं होते, ओके, बिकॉज एनीवन कैन डिज़ाइन their own special purpose application software for their own work और for their organization, for their company, ठीक है। वो जिस भी तरह के फील्ड में या सेक्टर में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में दे वांट टू रन स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करे, परफॉर्म करे, तो उसको कहा जाएगा स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज विद एनी जनरल user, ठीक। So what will be the definition or the meaning of a special purpose application software? इनको customized software भी बोलते हैं। The software which are designed to meet the specific needs of any user are called specific purpose एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। किसी भी स्पेशल आउटलेट्स के थ्रू, किसी भी स्पेशल शॉपिंग मॉल के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, हॉस्पिटल्स के थ्रू, ठीक है, होटल्स के थ्रू, इफ़ दे आर यूजिंग देयर ओन सॉफ्टवेयर, ठीक, जिसपे सिर्फ उनके फील्ड से रिलेटेड वर्क हो, तो दैट विल बी कॉल्ड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? सम फेमस एग्जाम्पल्स आर टैली, बिजी, एक्सेट्रा। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, एंड हम और नाम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एवरी ऑफिस
उनका अपना अगर एक खास तरह का वर्क है तो हो सकता है इट इज़ पॉसिबल दे माइट वर्क ऑन देयर ओन स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये मेनली ये कौन कौन सी फील्ड होती हैं जहाँ पे स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। वी कैन राइट द नेम ऑफ दोज फील्ड्स बट वी कैन नॉट फाइंड आउट द नेम ऑफ दोज स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सम ऑफ द फील्ड्स आर, ये कौन सी फील्ड्स होती हैं, रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन रिजर्वेशन और रेलवे रिजर्वेशन, बिलिंग सिस्टम, कहीं पे भी इफ़ वी आर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिटेलर, मेडिकल स्टोर, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, इफ़ वी आर पेइंग आवर बिल, तो हो सकता है जिस प्लेस पे हम लोग उस बिल को पे कर रहे हैं, that place, that office, okay, those workers, those users, they are using their own special purpose application software. And one more, payroll system, then you can write etc. So this is the meaning of special purpose application software. अब in our next class, I will explain you the meaning of utility software, and first I will clear the difference between system software and application software. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, I will clear the difference between system software and application software and what is the use of utility softwares. Alright, तो आज एक चीज़ और हम इसको क्लियर कर देते हैं. If you are having your notebooks, you can write some important points. ठीक है, important points, for example, कि who was the first person that created the database technology, who was the first person that created the word processor software, or who is the first person that create the processor. Okay, ऐसी कुछ important inventors, उनके name and the year of invention जो कि इस chapter में in your examination पूछे जा सकते हैं. So the first is, if you will get such question, कि who is known for his role in the development of the Pentium processor. So the answer is विनोद धाम. क्या इन्वेंट किया था इन्होंने? पेंटिनम प्रोसेसर. इन विच ईयर? ईयर, इफ यू डू नॉट नो द ईयर, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पेंटिनम. Second, who received the Turing Award for his outstanding contribution in database technology. ठीक है, so the inventor name is Charles W. Bachman. He received this award in 1973 for database management system. Third, who introduced the concept of word processing software? Inventor is Seymour. Seymour Rubinstein, okay, he founded Micro Pro International Incorporated in 1978. He developed what? Word processor software.
And one more important point which you have to write is, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इट इज कि वी आर यूजिंग दिस टर्म सॉफ्टवेयर अलॉट. ठीक है, हम ये जो वर्ड है सॉफ्टवेयर इसे बहुत यूज करते हैं. सो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस हु इंट्रोड्यूस दिस टर्म सॉफ्टवेयर? ये नाम कहाँ से आया? So the person was John W. Tukey, 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 not Turkey. John W. Tukey. In which year? 1957. The very first time he used or introduced the word software. जो programs होते हैं which we stored programs which we are using in computer to do our general or special purpose task, तो उसके लिए इन्होंने एक proper word design किया जिसको बोला गया software. The programs, stored programs which we are using to complete our daily task, चाहे वो स्पेशल पर्पस हो या जनरल पर्पस टास्क हो, उन स्टोर्ड प्रोग्राम्स को इन्होंने क्या बोला? सॉफ्टवेयर. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी. ठीक है, आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो वॉच टुडेज वीडियो अगेन. Clear your doubts regarding special purpose application software and general purpose application software, and if you are having any doubt, ask me in the next class. Okay, take care of yourself, and I'm going to end the session. Thank you.